So I start with crystallography. So crystallography, study of crystals. Simple power study of crystals. जो magma रू crystallize करंती गोटे certain condition रे. So crystal कौन? Crystals are polyhedral bodies, solid, bounded by well-developed faces, where the internal atomic arrangement is reflected by the external form. They go to definite internal atomic arrangement तंगर सरफेस थ्रू तुम्हें इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट जानी पारियो तब कहती क्रिस्टल को. सो क्रिस्टल मोर इट इज अ रिपीटेटिव यूनिट. गोटे फास्ट यूनिट प्रोड्यूस हुए तापर ग्रेजुअली दैट यूनिट विल कंप्लीटली रिपीट इटसेल्फ टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट क्रिस्टल. सो गोटे क्रिस्टल समहाउ तुम क्रिस्टल जो कि एडजेसेंट साइड को फेस कह जाए. दीटा फेस जो मीट करते एज कह जाए. दीटा एटा हूँ एज दीटा एडजेसेंट फेस जो मीट करती. एडजेसेंट साइड को तुम्हें फेस बोली कहूच. 3 और मोर फेसेस जो मीट कर कॉर्नर बोली कहूच. सो एज रे आमे इंटरफेशियल एंगल मेजर करते. सो इंटरफेशियल एंगल हूँ एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट फेसेस. गोटे यूज करा जाए गोटे इंस्ट्रूमेंट तक कहते कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर. to measure the interfacial angle. Corner जो angle measure करते that is called जो solid angle. तो क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करिया पाई हमें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यूज करते. क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तमे यूज करियो. सो वी यूज 3 इमेजिनरी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. So there are 3 axes, which 3 imaginary axes that used to determine the dimension of the crystal. A, B, C axis. The A axis konti, B axis konti, C axis konti. So A axis runs from front to back. B axis which is right to left को आ जाए. C axis को आ जाए top to bottom. Then the sign अनुसार है plus minus. फ्रंट को प्लस, बैक को माइनस, राइट को प्लस, माइनस, टॉप को प्लस, बॉटम को माइनस. तो कह पारे फ्रंट फेस रु बैक फेस जोड़ा जाउची सेटा होची ए एक्सिस. राइट फेस रु लेफ्ट फेस जोड़ा जाउची बी एक्सिस. टॉप रु बॉटम जो फेस जाउची दैट इज कॉल्ड जो सी एक्सिस. 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्रिस्टल. सो गोटे ही क्रिस्टल सिस्टम अछि जोथरे हमें चारिटा एक्सिस यूज करंते. हेक्सागोनल सिस्टम. So there is only one crystal system, जो hexagonal system. तो तुम्हारा we use 4 crystallographic axes. That is A1, A2, A3. A1, A2, A3 कितने use करा जाए? कितने तुम्हारा length of the crystallographic axis are same. So A1 equal to A2 equal to A3 not equal to C. Then तुम्हारा crystallographic axis कितने we determine 3 angles. इनका angle हमें determine करते. A, B, C, these are positive ends. So positive end भितर जहाँ एंगल आसे तसे अनुसार में डिफाइन करती. A to B होची गामा, B to C होची अल्फा, C to A होची बीटा. So angle between positive A and positive B is gamma. बाद में B रू start करूँ. positive B, positive C alpha, positive C, positive A बीटा, positive A, positive B gamma. सो 3टा जो एक्सिस अच्छी से इक्वल हो पारे अनइक्वल हो पारती. भर एंगल अल्फा बीटा गामा सेम हो पारे डिफरेंट हो पारे. सो डिपेंड अपॉन द क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम. सिस्टम ऊपर डिपेंड करे. सो एटा तीनटा तुमरा क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस. तो गोटे क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस जितने रन करे गोटे क्रिस्टल भितर. सपोज हम 2D रे देखिया गले ताले सपोज कि एटा को तुम धर ए एक्सिस कहूच, एटा को बी एक्सिस कहूच, सेंटर जोड़ा सी एक्सिस कहूच.
तो क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस सेंटर रो क्रिस्टल फेस को जेतिकी डिस्टेंस इंटरसेक्ट करे ताको इंटरसेप्ट बोली कहा जाए। तो ये तुम्हारा आसीबो क्रिस्टल इंटरसेप्ट जोटा कि यूज करा जाए टू रिप्रेजेंट और टू सिंबलाइज द फेस ऑफ द क्रिस्टल बा क्रिस्टल फेस को रिप्रेजेंट करिया को हमें क्रिस्टल इंटरसेप्ट यूज करते। बट क्रिस्टल इंटरसेप्ट कौन इनिशियल कॉन्सेप्ट तो हमें मोर सोफिस्टिकेटेडली तुमरा मिलर इंडिसेस रे रिप्रेजेंट करते। सो तीटा जिनस आसीबे गोटे क्रिस्टल इंटरसेप्ट गोटे वेइस पैरामीटर रोची मिलर इंडिसेस सो क्रिस्टल इंटरसेप्ट होची सिंपल गोटे पर्टिकुलर फेस को ऑल द क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस सेंटर रू केते डिस्टेंस रे इंटरसेक्ट करते। ठीक है। सो इट इज द कैन से a face intersected by all the three axes. So distance from the center to the intersection point is called as your intercept. तो कौन सी क्रिस्टल इंटरसेप्ट तो बात हो जाता तो तुम्हें वेइस पैरामीटर मिलर इंडिसेस बाहर कर पारियो ना। तो हमें वेइस पैरामीटर बाहर करते crystal intercept by sorry so crystal intercept by unit length term ऐसी कि यूज करा जाए फॉर कि लेंथ ऑफ द यूनिट सेल यू कैन से। तो यूनिट सेल क्वेश्चन मोस्टली पड़े कि जो यूनिट लेंथ था सब 111 था जदि 11 न था कि जदि यूनिट सेल रो अदर डिस्टेंस आसीओ ताल तुम्हें से डिस्टेंस यूज कर परियो यदि यूनिट लेंथ थिले 111 यूज कर परियो। जदि इठी 111 रहला ताल क्रिस्टल इंटरसेप्ट इक्वल टू वेइस पैरामीटर होला कि तापर मिलर इंडिसेस the unit length divided by intercept। तो तुम्हारा क्वेश्चन जितना पड़े सब ये पड़े कि 3a 2b 1c वाला क्वेश्चन पड़े जो कि सब यूनिट लेंथ को 111 हिसाब से कंसीडर करा जाए। समटाइम्स तुम्हारा पड़ी थो क्वेश्चन कि इंटरसेप्ट तुम्हारा 3 to 1 अच्छी क्रिस्टल जो यूनिट सेल इंटरसेप्ट धरा 1 to 1 अच्छी एमती। जो तुम्हारा ये क्वेश्चन पड़ला ताल सिंपल तुम्हें मिलर इंडिसेस बाहर करबा पहले 1/3 1/2 1/1 नाउ। ठीक है। यदि ये पड़े ताले एटा दी यूनिट लेंथ बा यूनिट सेल डायमेंशन भी एटा होची इंटरसेप्ट भी ताले से अनुसार 1/3 2/2 1/1 नाउ दी प्रकार क्वेश्चन आछो। तो आइदर केते तुमरो यूनिट सेल लेंथ अछि केते इंटरसेप्ट अछि से अनुसार कहना जे कोनोसी गोटे इंटरसेप्ट ऑलवेज इज ए मल्टीपल ऑफ यूनिट लेंथ जहाँ यूनिट सेल रो जहाँ डायमेंशन से तार मल्टीपल थाए फिर हमें देखिबा कुतरे तुमरो मु देखे देबे एतरे ट्रांसलेशन सिमेट्री। तमु क्वेश्चन सब केबे पड़े नि जे कि क्वेश्चन ऑलवेज तुमरो पड़े मिलर इंडिसेस दे तो वेइस पैरामीटर पचाथियो तो वेइस पैरामीटर दे तो मिलर इंडिसेस पचाथियो। यानी वेइस पैरामीटर और मिलर इंडिसेस दे आर आल्सो रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्रिस्टल इंटरसेप्ट दे कि मिलर इंडिसेस पचारे क्रिस्टल इंटरसेप्ट दे वेइस पैरामीटर के पचारे है। तो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बळे क्वेश्चन आदरो आसे सब बळे इजी क्वेश्चन आसे सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन आसे तुम इजीली खाली रेसिप्रोकल बाहर करी कर पारियो।
तो रेस्ट प्रकार करी ताको होल नंबर बा एलसीएम नहीं की कंसीडर करके बाहर कर पारबे सब रहला 1/3 1/2 1/1 1/3 1/2 1/1 हैला त हम कोन करते एलसीएम नियंती 6 नहीं जीवो तो 6 * 1/3 6 * 1/2 6 * 1/1 तो एटा हला 2 3 6 ठीक अच्छे तो ये तुम बाहर कर सेटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट जिनस तापर जो क्रिस्टल सिमेट्री सो क्रिस्टल सिमेट्री बा सिमेट्री ऑपरेशंस तुम कह पारो देयर आर 7 सिमेट्री ऑपरेशन विद इन क्रिस्टल मैं होची ट्रांसलेशन होची मिरर रोटेशन इन्वर्सन रोटो इन्वर्सन स्क्रू एक्सिस ग्लाइड प्लेन 1 2 3 4 सो आपको भी कैटेगराइज कराई दीटा वे रे गोटे फिक्स सिमेट्री गोटे फिक्स्ड सिमेट्री जोरा फिक्स सिमेट्री से आसी जो तुमरो 2 3 4 5 एगरा होची मिरर रोटेशन इन्वर्सन रोटो इन्वर्सन आ कहजे फिक्स सिमेट्री कहना एठी तुम्हारा सिमेट्री तुम्हारा ऑब्टेन करिया को कोनोसी पॉइंट को मूव करिया को पड़े नहीं सो दीज आर कॉल्ड एज फिक्स सिमेट्री और पॉइंट सिमेट्री कहा जाय को पॉइंट सिमेट्री जहाँ को बेस करी तुम 32 क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन कराई तापर आसो तुम ट्रांसलेशनल सिमेट्री रे पड़े आसो ट्रांसलेशन आसो स्क्रू एक्सिस आसो ग्लाइड प्लेन आसो ये तीन आसो कौन ट्रांसलेशनल सिमेट्री जो कि तुम कौन भी सिमेट्री ऑपरेशन बा सिमेट्री शो करिया सिमेट्री माने कौन सिमिलरिटीज क्रिस्टल ले शो करछो ताको शो करिया पड़े तुमको पॉइंट को डिस्प्लेस करिया पड़े से ताको ट्रांसलेशनल सिमेट्री कहा जाय अदर वे रे तमे दीटा करि पारिबो गोटे होचे सिंपल सिमेट्री सिंपल आउट होची कॉम्बिनेशन सिंपल सिमेट्री दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल ऑपरेशन ने 1 2 3 4 जीवो 2 3 4 जीवो आउ 5 6 7 जीवे कॉम्बिनेशन वन मीन्स रोटो इन्वर्सन इट इज रोटेशन प्लस इन्वर्सन स्क्रू एक्सिस इट इज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन ग्लाइड प्लेन इट इज ट्रांसलेशन प्लस मिरर तो ये तुम रहा these 3 are combination symmetry these 4 are simple symmetry तो मिरर को हमें कहते प्लेन ऑफ सिमेट्री रोटेशन को हमें कहते एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन्वर्सन को हम कहते सेंटर ऑफ सिमेट्री जो मिरर अच्छी मिरर बात में तब कहूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिरर बा प्लेन ऑफ सिमेट्री होची कोनोसी क्रिस्टल तुम इमेजिनरी मिरर प्लेन पुट करबा जो क्रिस्टल ता दीटा इक्वल हाफ रे डिवाइड हो ताको कोनते हम कोन प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइक सपोज धर एठी एमती गोटे क्रिस्टल रहला एठी तुम गोटे प्लेन पुट कला जोटा कि ताको दीटा इक्वल हाफ रे डिवाइड कला ताको मिरर प्लेन बोली पाजो कोन कहजो मिरर प्लेन तो मिरर प्लेन आ गोटे कंडीशन होची कि मिरर प्लेन टू एडजेसेंट फेसेस गुरा सब पॉइंट रे इक्वल डिस्टेंस रे थिबा दरकार नहले कंसीडर करा जेबनी मिरर प्लेन जोतरे कि तुमरा ई केस रे where adjacent faces are not at equidistance इतमे एटा को तुमे मिरर प्लेन बोली कंसीडर करबा नाही सो इट इज नॉट अ मिरर प्लेन सो मिरर प्लेन तुमरो सबटर हाईएस्ट मिरर प्लेन तुमे क्यूब रे पाइबो 9 मिरर प्लेन्स और अदर पे कम पाइबो तो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम रे बा क्रिस्टल क्लासेस रे जते भी तुमरो मिरर प्लेन प्रेजेंट अछि तुमे ताको डिराइव कर पार कोटे
HM symbol तापर आसीबो तुमरो axis of symmetry तो axis of symmetry बा रोटेशन जोटा कहउछ जे क्रिस्टल को हमें रोटेट करबा ताले सिमिलर फेसेस एजेस बा कॉर्नर रिपीट हेबे 360 रोटेशन रे तो जेते थोड़ा रिपीट हेबे हम से अनुसार सेति की फोल्ड बोली डिनोट करंती मैं वन फोल्ड बोली कहि पर बट वन फोल्ड किसे नाही तो टू फोल्ड टू स्टार्ट हुए टू फोल्ड थ्री फोल्ड देन फोर फोल्ड देन सिक्स फोल्ड so five fold and more than six fold is not possible because crystal atomic arrangement ही सेमती न था जे कि जो 5 fold से देखे परिबो बा 6 fold रो above देखे परिबो so 2 fold हेले it repeats faces are repeats in each 180 degree 3 fold हेले 120 degree 4 fold हेले 90 degree था repeat हबो 6 fold हेले 60 degree था टू फोल्ड को तुम्हें सॉलिड इलिप्स बा हॉलो इलिप्स रिप्रेजेंट करो एटा को ट्रायंगल बा सॉलिड ट्रायंगल बा हॉलो ट्रायंगल तुम नहीं पारिबो स्क्वायर नहीं पारिबो 4 फोल्ड पाई हेक्सागन नहीं पारिबो 6 फोल्ड पाई सब सिंबलाइज करा जाए सिमेट्री को इन ए स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन तो लगा तुम्हारा एक्सियल सिमेट्री बा रोटेशन तुम कहूछ नेक्स्ट तुम्हारा सिवा इन्वर्सन इन्वर्सन बात कहूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इन्वर्सन हूँ इट इज ए पॉइंट विद इन ए क्रिस्टल क्रिस्टल गोटे एमती गोटे जगह गोटे पॉइंट नब जो तुम सिमिलर फेसेस एजेस एंड कॉर्नर्स इक्वी डिस्टेंस थे हमने ये पॉइंट रू सब जो जी सिमिलर फेसेस सब सिमिलर इक्वल डिस्टेंस रहा दरकार कॉर्नर सब इक्वल डिस्टेंस रहा दरकार ताल ताको हम को कहबा गोटे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो कौन से गोटे क्रिस्टल रे तुमार जो मिरर प्लेन मल्टीपल थाए डिफरेंट एक्सिस एलंग तुम मिरर प्लेन पाइबो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री मल्टीपल थाए किंतु गोटे सेंटर ऑफ सिमेट्री आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट कोन सेंटर ऑफ सिमेट्री गोटे क्रिस्टल गोटे ही थाए आइदर इट इज प्रेजेंट और इट इज एब्सेंट तो हमें स्मॉल आई थ्रू रे डिनोट करते इन्वर्सन तबरे सो रोटो इन्वर्सन सो रोटो इन्वर्सन होची इट इज ए कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ रोटेशन प्लस इन्वर्सन रोटेशन एंड इन्वर्सन तुम कौन सी क्रिस्टल को जिते नॉर्मली रोटेट करमती इट विल शो रोटेशनल सिमेट्री बट तुम इफ यू रोटेट इट एंड यू इन्वर्ट इट देन यू विल गेट सिमिलर फेसेस रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फेसेस तुम यदि खाली रोटेट करूथो तुमको सिमिलर फेसेस मिलिबो नाही यदि सिमिलर फेसेस खाली रोटेशन में मिलिबो दैट विल कम अंडर एक्सिस ऑफ सिमेट्री सिंपल और यदि तुमरो ओनली रोटेशन ने मिलनी रोटेशन करने सहित यू हैव टू इन्वर्ट द क्रिस्टल देन तुमको सिमिलर फेस रिपीटेशन मिलुचे ताले ताको रोटो इन्वर्सन बोली कहै रोटो इन्वर्सन माने तुमरो रिपीटेशन ऑफ फेसेस अकर बिकॉज ऑफ टू ऑपरेशन यू हैव टू रोटेट इट एंड इन्वर्ट इट विथ सम डिग्री इंटरवल तो से अनुसार तुमरो एठी भी सही हमें फोल्ड ही यूज करंती है कि कोन फोल्ड ही यूज करंती टर्म बट सेठी गोटे बार यूज करा जाऊ जैसे कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार पूरा इंडिकेट करे कि रोटेशन सहित इन्वर्सन है 1 बार रे तुम 360 डिग्री रोटेट कला पर इन्वर्ट करियो 2 बार रे तुम 180 रोटेट करियो थरे इन्वर्ट करियो पुणी 180 रोटेट करियो थरे इन्वर्ट करियो तो इन्वर्सन ऑपरेशन रे समय मन रखथिबो जो फेस तुम स्टार्ट करछ से फेस रे आसी पहुंचबो जते तुम जानिबो तुम सरला बोली हेले तो 1 बार रा सिंबल किछि नाही 1 बार इट इज इक्विवेलेंट टू इन्वर्सन 1 बार इज इक्विवेलेंट टू इन्वर्सन so 2 bar is equivalent to a mirror plane 3 bar is equivalent to a 3-fold axis plus inversion 4 bar doesn't have any equivalent 6 bar hochi 3 plus mirror plane 1 bar doesn't have any symbol 2 bar has this symbol
3 bar has this symbol. तुमरा ट्रायंगल भितर गोटे कोन सर्कल रहइबो 3 bar. 4 bar has this symbol and 6 bar has कि हेक्सागन भितर गोटे ट्रायंगल रहइबो. These are the symbols. तर स्टेरियोग्राफी पोजीशन मोर इंपोर्टेंट मैं मन रखि दबा. देखो सेटा हला तुमरो 1 बार जोते कि तुमरो सॉलिड होलो पॉइंट में 180 डिग्री पर जे कोनसी तुमरो स्टेरॉइड पोजीशन रे जे तुमे सॉलिड ठीक 180 डिग्री पर गोटे होलो पाउछ तार तुमे जानि गोटे इन्वर्सन ऑपरेशन अछि कोन इन्वर्सन ऑपरेशन प्रेजेंट अछि. सो 2 बार इट इज इक्विवेलेंट टू मिरर प्लेन. 3 बार तुमे देखो ईच पॉइंट पई तुमरो गोटे सॉलिड पे गोटे होलो 180 पर प्रेजेंट अछि सेत पे 3 फोल्ड ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू 1 3 फोल्ड प्लस इन्वर्सन. तुम पाखे गोटे 3 फोल्ड अछि सब पे गोटे गोटे इन्वर्सन नै जबो तुमरो हे जबो 3 बार. तापरे एना होची 4 बार ऑपरेशन थोड़ा कास्ट इक्विवेलेंट नुहे 6 बार ऑपरेशन तुमरो तीनटा फोल्ड अछि तळ गोटे मिरर प्लेन रख देबो तळ आउ तीनटा फेस जनरेट हे फर्स्ट तीनटा फेस अछि गोटे मिरर प्लेन रख देला आउ तीनटा फेस जनरेट 6 बार. सो दीज आर तुमरो स्टेरॉइड प्रोजेक्शन ऑफ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार. तो ये सब इंपोर्टेंट 3 फोल्ड का साथ इक्विवेलेंट 6 बार मोस्ट ऑफ द टाइम रे पड़े 3/m बोली मोस्ट ऑफ द टाइम रे तुमरो क्वेश्चन पड़े स्टेरॉइड प्रोजेक्शन हिसाब रे पड़ी परिबो नले डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े कि को ऑपरेशन सहित समान कि 6 बार देखि पचारथिबा आदर मिरर प्लेन प्रेजेंट अछि कि नाही कारण 6 बार जोटी लिखा हिते माने तार मीनिंग होची 3/m अछि माने मिरर प्लेन जोटी प्रेजेंट अछि. ठीक अछि. तो एडाला तुमरो रोटो इन्वर्सन. तापर इंपोर्टेंट उठुची कि ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन होची कोनोसी पॉइंट को तुमे गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन रे स्पेसिफिक अमाउंट रा ट्रांसलेट करेबो एंड सेटा को रिपीटेशन सेही वे रे थ्रू आउट द स्ट्रक्चर करिवो. तुमे यदि गोटे पॉइंट को गोटे डायरेक्शन रे ट्रांसलेट कलो फॉर सपोज 2 सेंटीमीटर देन तुम से भाया रिपीट कर चलो जो तुम दीटा डायरेक्शन में कल ताले से भाया सब को दीटा डायरेक्शन में रिपीटेशन कर. तो ये भाया ट्रांसलेशन कांसेप्ट. ट्रांसलेशन होची तुमरा कि मूवमेंट ऑफ ताको हमें टर्म यूज करंती मोटिफ बा नोड बोली यूज करंती बा आयंस बोली तुम कहि परिबो मूवमेंट ऑफ आयंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन at a specified amount. तो स्पेसिफिक डायरेक्शंस रे तुम करिवो स्पेसिफाइड अमाउंट रे तुम करिवो और जहां तुम इनिशियल ट्रांसलेशन करिसो दैट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रक्चर. यदि कोन से जगह तुम ट्रांसलेशन ऑपरेशन चेंज कलो दैट विल बी ए डिफरेंट क्रिस्टल. गोटे सिंगल क्रिस्टल पे एटा सब बळे कांस्टेंट थाए जोटी कि तुमरो ट्विनिंग क्रिएट होय केते बळे से बळे तुमरो गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन चलतो डायरेक्शन चेंज हिजो. तो से जगह रे से दे
the two will be considered as two different crystal though they have same composition different crystal will consider kara so एठी हला तमर ट्रांसलेशन हमर 2D ट्रांसलेशन होची इंपोर्टेंट 1D रे किछि प्रोड्यूस होनी लिनियर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुए 2D रे तुमर कम प्रोड्यूस हो गोटे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स प्रोड्यूस हवा जोटा को हमें कहउचंती प्लेन लैटिस कोन प्लेन लैटिस तो एमती तुम्हारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सब प्रोड्यूस हवा जोटा को हमें कहवा गोटे प्लेन लैटिस तेरा प्रोड्यूस हो तुम यदि ईच को देखो रिपीट करछो दुटा डायरेक्शन सो डिफरेंट वे रे हमें रिपीट करि परबा से अनुसार डिफरेंट से प्लेन लैटिस प्रोड्यूस करबे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लेन लैटिस 5 टाइप्स ऑफ प्लेन लैटिस देखंती देयर आर 4 शेप बाय यूनिट मेश चारिटा शेप रो किंतु 5 टाइप रो होला तो गोटे तुम कहउछ स्क्वायर नेट गोटे कहउछ हम ऑर्थोनेट गोटे कहउछंती क्लाइनोनेट गोटे कहउछंती हेक्सानेट गोटे कहउछंती डायमंड और ताको सेंटर्ड रेक्टेंगुलर बोली कहउछ सो स्क्वायर नेट तुम जो ट्रांसलेट करो दीटा डायरेक्शन ट्रांसलेशन विल बी इक्वल ये ए हेले ए हबो तांग भीतर एंगल केता हबो 90 डिग्री सो द ट्रांसलेशन डायरेक्शन जो दीटा डायरेक्शन होची इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन हबो एंगल रहबो 90 डिग्री ऑर्थोनेट रे अनइक्वल अमाउंट रहबो बट एंगल रहबो 90 डिग्री त माने एठी जदी तुमे हमें a1 = a2 रहबो एठी a1 नॉट इक्वल टू a2 रहबो किंतु a1 a2 भीतर एंगल केते रहउची 90 बोथ केस रे रहइबो बोथ केस रे कहबो 90 क्लाइनोनेट रे a1 is not equal to a2 angle between a1 and a2 जनरल जे कोनोसी एंगल हे पारिबो काय पारिबो जे कोनोसी एंगल हे पारिबो हेक्सानेट रे तुमरो a1 = a2 जोतरे की एंगल बिटवीन a1 and a2 होची 60 डिग्री बा 120 डिग्री हे परियो तापरे डायमंड आछो डायमंड नेट होची तुमरो रंबस शेप राछो काछो रंबस शेप राछो तो ए जो डायमंड नेट अछि दीटा बुक रे तुम डिफरेंट देछि परकिंसर गोटे प्रकार देछि आ सेंटर देबो रेक्टेंगुलर देछि तुमरो नेस सेंटर रेक्टेंगुलर हेले तुमरो इट विल बी लाइक दिस जोतरे की दीटा अनइक्वल हवा एंगल 90 टाइप यदि डायमंड नेट करिवो a1 = a2 हे जो डायमंड हेले a1 = a2 हे जो तादरे एंगल टा जनरल रहबो 60 डिग्री छडा भी किछि अदर एंगल भी हे परियो है चलो ए जो शेप हिसाब देखिया गले हमर शेप केतरा हला गोटे हला स्क्वायर गोटे हला रेक्टेंगुलर गोटे हला पैरेललोग्राम क्लाइनोमेट कोन पैरेललोग्राम आ गोटे हला हेक्सागन रंबस टाइप तो चारिटा ही शेप आछ कोन से चारटा शेप आसुची सेते पे याको कोन कहउछन हैं 4 यूनिट मेश शेप 5 टाइप्स ऑफ प्लेन लैटिस यदि दीटा डायरेक्शन हैला तमरा प्लेन लैटिस हबो यदि तीनटा डायरेक्शन हैला ताल कोन हबो क्रिस्टल लैटिस हे जिवो क्रिस्टल लैटिस बा 3D लैटिस जोटा कहउछो ताको हम कोनथि स्पेस लैटिस बा जोटा फास्ट प्रोड्यूस होय ताको यूनिट सेल बोली कहै यदि तीनटा डायरेक्शन ने तुम प्रोड्यूस करियो यदि तीनटा डायरेक्शन ने यदि शेप प्रोड्यूस हैला बा तीनटा डायरेक्शन यदि ट्रांसलेट हैला ताले सेमाने 3D स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करछि दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द क्रिस्टल जोटा को हम यूनिट सेल कहते तापर सेही जो यूनिट सेल प्रोड्यूस हो दे गो ऑन रिपीट इटसेल्फ टू प्रोड्यूस ए कंप्लीट क्रिस्टल जोटा को तुम स्पेस लैटिस कहउछो दैट इज ए 3D लैटिस सो फास्ट दीटा डायरेक्शन तुम ट्रांसलेट कला तो हमें कोनोसी को दीटा डायरेक्शन एमती ट्रांसलेट कले तो हमें कोन पाइले सपोज धरो गोटे शेप पाइले जोटा प्लेन लैटिस कहउछो ठीक अछि त हमें आउ गोटे डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेबा तो एमती माने डायरेक्शन ट्रांसलेट कि ये
ए डायरेक्शन ट्रांसलेट होइछि ए डायरेक्शन ट्रांसलेट होइछि हमें आ गोटे डायरेक्शन ट्रांसलेट करले सब जाक तो कौन मिलियो तुमको 3D स्ट्रक्चर गोटे मिलियो सेमती सब कले तुम गोटे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क पाइब जोटा फास्ट प्रोड्यूस हुए ताको यूनिट सेल कह जाए एटा कंप्लीटली बारंबार रिपीट हो तो जो यूनिट सेल प्रोड्यूस हुए जोटा स्पेस लैटिस को देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल रोची आमे कहते primitive unit cell and centered unit cell. Center has three types of unit cell. Body centered, face centered, end centered. So तुम्हारा जो primitive है suppose this is an unit cell so unit cell has only तुम्हारा atoms present at the corners कोड थो only corner रे present थे ताको primitive बोले कहा जाए if atoms or ions present only at the corner body centered हेले तुम्हारा atoms present at the corner सब केस रे तुम देखो primitive रे only corner रे थी ठीक है सेंटर रे कॉर्नर रे थाई की ता सहित एडिशनल पॉइंट्स थी तो बॉडी सेंटर रे आल्सो प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन एटम एट द सेंटर गोटे एटम कोड थो सेंटर थो फेस सेंटर रे से बड़ा कॉर्नर रे एटम थो एंड ईच फेस रे थिबे एंड सेंटर रे कॉर्नर रे एटम थो एंड अपोजिट फेसेस रे ही ओनली प्रेजेंट थो देखो कॉर्नर एटम रहिला ता सहित तुमरो ओनली अपोजिट फेसेस रे ही तुम एटम पाइबो गोटे सिंगल अपोजिट फेसेस रे नॉट ऑल फेसेस सेतल ताको एंड सेंटर बोली कह जाय तो जो एटम गुरा कॉर्नर रे प्रेजेंट थांदी से माने गोटे पर्टिकुलर काना इ देखो एटा गोटे यूनिट सेल अछि माने आउ का सता लागि थियो टुडे तुमको देखै दोछि सपोज धर एठी गोटे एटम प्रेजेंट अछि ताले ई जो एटम ता अछि एक चारिटा से तुम्हारा पार्ट को कंट्रीब्यूट करूछि होल गोटे एटम जदि कॉर्नर रे प्रेजेंट थाए से गोटे यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करे से करे 8टा यूनिट सेल जदि जो एटम गुरा कॉर्नर रे रहंती से माने गोटे पर्टिकुलर यूनिट सेल को 1/8 पार्ट तांकर कंट्रीब्यूट करथि ठीक अछि 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करथि एते गोटे प्रिमिटिव यूनिट सेल रे यू विल फाइंड वन एटम गोटे प्रिमिटिव यूनिट सेल रे केतरा एटम थाए वन एटम थाए गोटे बॉडी सेंटर्ड रे तुम कॉर्नर रे सब वन हे जिवे सेंटर रे जोटा रहउछि सब बळे गोटे रहबो गोटे यूनिट सेल रे दीटा एटम फेस सेंटर्ड रे चारटा एटम रहबो कना जो माने फेस रे रहउछन से माने हाफ कंट्रीब्यूट करबे जो माने फेस रे रहउछन से माने कंट्रीब्यूट करबे कोन हाफ गोटे यूनिट सेल को एग्जांपल तुम देखा एठी जदी तुमर गोटे सॉरी एठी जदी तुमर गोटे एटम रहउछि ताले ये एठी आधा रहबो एठी आधा रहबो है तेणु जो जदि तुम फेस रे रोची तो केतरा हम ईच फेस रे आधा आधा कंसीडर कर दियो 6टा फेस अछि ईच फेस रे हाफ रहबो तबे 3 एटम्स हबो आ कॉर्नर पे गोटे एटम तो टोटल हला 4 एटम्स सेमते एंड सेंटर रे रहबो कोन सब कॉर्नर पे गोटे अपोजिट फेसेस पे हाफ हाफ 1 तो 2 रहबो सो गोटे प्रिमिटिव यूनिट सेल रे तुम पाइबो 1 एटम गोटे बॉडी सेंटर रे पाइबो 2 एटम फेस सेंटर रे पाइबो 4 एटम एंड सेंटर रे पाइबो 2 एटम सो प्रिमिटिव यूनिट सेल को तुमरा सिंबलाइज करा जाय बाय p बॉडी सेंटर को सिंबलाइज करा जाय i फेस सेंटर को सिंबलाइज करा जाय f एंड सेंटर को तुमे e बोली कहबो सिंबल तो ई गुरा होची कोन दीज आर यूनिट सेल सो आकु नहीं कि तुम्हारा 6टा क्रिस्टल सिस्टम कराई कि डिफरेंट शेप रे यूनिट सेल जो तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन लैटिस पड़ो जो थर्ड डायरेक्शन जो ट्रांसलेशन होची सी मे बी दीटा डायरेक्शन जो हेची ऑलरेडी तांका साथ समान हे पारे मे बी डिफरेंट हे पारे कि डिफरेंट शेप रो डिफरेंट एंगल रो हे पारे तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा डिफरेंट
क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाहर तो से अनुसार तुम डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम आसे को थ्रू 3D ट्रांसलेशन बोले जोटा कि 6टा सिस्टम पढ़ुछ सो ये जो टाइप ऑफ यूनिट सेल तुम्हें पढ़ला डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल तुम डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम रे मिलिबो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम रे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल मिलिबो सब टाइप ऑफ यूनिट सेल ओनली खाली गोटे क्रिस्टल सिस्टम मिले सो को सिस्टम रे कोन यूनिट सेल प्रोड्यूस हेई परिबो दैट कम्स अंडर तुमरो ब्राविस लैटिस कोन द कोन ब्राविस लैटिस तो 6टा सिस्टम अछि गोटे आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक सिस्टम में कौन आसो प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड तो प्रिमिटिव हे परिबो बॉडी सेंटर्ड हे परिबो फेस सेंटर्ड हे परिबो सो आइसोमेट्रिक रो तुम्हें प्रिमिटिव यूनिट सेल प्रोड्यूस हे परिबो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल प्रोड्यूस हे परिबो फेस सेंटर्ड हे परिबो बट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल अदर प्रोड्यूस हे परिबो नै ती टेट्रागोनल सिस्टम प्रिमिटिव हे परिबो बॉडी सेंटर्ड हे परिबो तापरे ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव हे परिबो बॉडी सेंटर्ड हे परिबो फेस सेंटर्ड हे परिबो एंड सेंटर्ड हे परिबो मोनोक्लिनिक सिस्टम प्रिमिटिव हे परिबो एंड सेंटर हे परिबो ट्राइक्लिनिक सिस्टम प्रिमिटिव हे परिबो हेक्सागोनल सिस्टम प्रिमिटिव हे पारे गोटे स्पेशल आर टाइप रे पारो रंबोहेड्रन पाई ठीक अछि तो केतरा रहला ताले 3 टोटल तुमर एटी 14 सो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्राविस लैटिस अब देखला तो आइसोमेट्रिक सिस्टम रे रहला आइसोमेट्रिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिन ट्राइक्लिन हेक्सागोनल सबरो यूनिट सेल रो शेप अलगा लाइक इसमें को कि तुमर एटी पीआईएफ देखौची पीआई देखौची पीआईएफई देखौची पी 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 और आर ए डॉट स्पेशल टाइप आर इज आल्सो ए प्रिमिटिव आर कोन रे प्रिमिटिव तो एडी हला तुमरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राविस लैटिस तो गोटे यूनिट सेल रे तुमर केते एटम प्रेजेंट अछंती तुम जानलो से अनुसार तादर हमें फार कर दे पैकिंग एफिशिएंसी को मार करते पैकिंग हाँ आते पैकिंग एफिशिएंसी सो पैकिंग एफिशिएंसी मेन माने जनरल कांसेप्ट होच कोन कि गोटे सपोज थिंग अछि तादरे तुमरो एंती एटम पैक हे गछंती ताले से केते जगह एटम ऑक्युपाई करछि दैट इज द एफिशिएंसी कंप्लीट 100% स्पेस रो केते जगह एटम ऑक्युपाई करछि तो कोन गो पैकिंग एफिशिएंसी तो पैकिंग एफिशिएंसी रो फार्मूला ताले कोन हो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100 तो वॉल्यूम atom divided by into 100 जो कि तुम्हारा जना पड़ो जे केते ऑक्युपाई हेछि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम बाय टोटल वॉल्यूम तो यूनिट सेल कथा कहछो ताले टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आ जेति कि तुम्हारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस आयंस ताको हम कोन कोन पैकिंग एफिशिएंसी तो यूनिट सेल ला पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करन पर्टिकुलरली तुमरा गोटे होची सिंपल क्यूबिक आउटे बीसीसी बोली कहंती बॉडी सेंटर्ड क्यूब एटा सब क्यूबिक स्ट्रक्चर ऊपर कहौ छला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक out of face centered cubic सब यूनिट सेल ला शेप एटी कोन क्यूब शेप रो जदि से गोटे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हबो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हबो ताले सेटा को प्रिमिटिव बोली कहै कोन कहै प्रिमिटिव तार एटम ओनली प्रेजेंट थिबा एट द कॉर्नर
तो से केस रे तुम आर पैकिंग एफिशिएंसी केते परसेंट ऑक्युपाई करे देखो सिंपल क्यूब प्रक्रिया हैला 52% अप्रोक्सीमेटली बॉडी सेंटर रे 67.6% पाखापाखि आसो फेस सेंटर रे 74% अप्रोक्सीमेटली आसो तार एफिशिएंसी जेति कि ऑक्युपाई करछंती ताकू कोंती पैकिंग एफिशिएंसी जेति कि जगह फांका रहि जो हेटा पोरोसिटी है तो इटी ईच तुम्हारा यूनिट सेल ले कौन था देयर इज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यूब गोटे था ता सहित आयन था आयन रो रेडियस जो पर्टिकुलर यूनिट सेल बा क्यूबिक यूनिट सेल हो कि पर्टिकुलर यूनिट सेल ले जहां आयन रो रेडियस था है एंड द साइड ऑफ द यूनिट सेल क्यूबिक केस रे तांग भीतर रिलेशन अछि एटा सिंपल क्यूबिक रे तुम्हारा a = 2r a होची तुम्हारा साइड ऑफ यूनिट सेल r होची रेडियस ऑफ आयन सिंपल केवल था तुम सिंपल के कॉर्नर खाली एटम थांती तो जो साइड टा हबा दीटा रेडियस रा एडिशन हेले बॉडी सेंटर रे कौन था a = सो a जो 4r/√3 पूरा इन केस ऑफ बॉडी सेंटर फेस सेंटर रे a = 2√2r का रिलेशन यदि तुमको एडजेसेंट साइड जना अछि तमे ताले रेडियस ऑफ द आयन बाहर कर परिबो बा रेडियस ऑफ द आयन जदि जना अछि ताले तमे एडजेसेंट साइड सेव कर तोरा तुमरो यूनिट सेल तो एति के तुमरो रहला होछि कि सिमेट्री पार्ट तापर तुमरो आ दुईटा जिंस खाली कहि दउछि गोटे होछि स्क्रू एक्सिस गोटे होछि स्क्रू एक्सिस आ गोटे होछि ग्लाइड प्लेन स्क्रू एक्सिस होछि तुमरो लाइक दिस सो तुमको रोटेट करबा सहित ट्रांसलेट करोछ तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन ग्लाइड प्लेन होछि लाइक दिस भावा जी की ट्रांसलेशन प्लस मिरर पुन ट्रांसलेशन प्लस मिरर तो ग्लाइड प्लेन होछि कोन ट्रांसलेशन प्लस मिरर एरा तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑपरेशन जोड़ा तुम्हें बेसिकली यूज करे स्पेस लैटिस डिफाइन करे तो एटा हला तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस विद इन द क्रिस्टल तो जो क्रिस्टल फॉर्म एटा बहुत इंपोर्टेंट सो फास्ट जीवा में सिंपल फॉर्म कॉम्बिनेशन फॉर्म ओपन फॉर्म क्लोज फॉर्म सिंपल फॉर्म ऑल सिमिलर फेसेस क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ ऑल सिमिलर फेसेस सिंपल फॉर्म जैसे एग्जांपल तुम्हें क्यूब नोच कॉम्बिनेशन फॉर्म होची क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ 2 or more simple form that is combination form open form crystal doesn't have sufficient phase to enclose and space जोटा कि तुम्हें एग्जांपल प्रिज्म नो जो एठी प्रिज्म रा चारटा फेस थाए जोटा कि वर्टिकल फेस चारटा ऊपर तळ कोन थाए एटा ओपन थाए ओनली चारटा वर्टिकल फेस तो ओपन फेस ए पर न हले तुम्हें डोम नो जो ओपन फेस है ना तापर क्लोज होची थोड़ी crystal have sufficient number of faces to enclose a space एटा होची क्लोज फॉर्म तो एग्जांपल हम ओपन क्लोज रो देखि दबा ओपन रो एग्जांपल होची ओपन फॉर्म रो एग्जांपल तुम पेडियन नबा पेडियन पिनाकॉइड डोम स्पेनॉइड all are open form. So pedion consists of a single face, pinacoid consists of 2 parallel face, dome consists of 2 non-parallel face with a mirror plane, sphenoid consists of 2 non-parallel faces with a twofold axis, prism consists of 3, 4, 6, 8 number of faces, but all the faces must parallel to a common axis. All the faces must parallel to a common axis, generally the c axis.
pyramid होची all the faces must intersect a common axis, that is called pyramid. that भी सही 3 4 6 8 number of faces present है. ये सब open form. तुम closed form ले ले, तुम cube लियो, octahedron लियो, dodecahedron लियो, scalenohedron लियो. যদি কিউবর 6টা ফেস, অক্টাহেড্রন 8টা ফেস, ডোডেকাহেড্রন 12টা ফেস, স্ক্যালেনোহেড্রন 8 আর 12 ফেসেস, রম্বোহেড্রন নেই পারো 6 ফেসেস. সো সব আঙ্গ হচ্ছেন ক্লোজ ফর্ম. জেনারেল ফর্ম, স্পেশাল ফর্ম, রেস্ট্রিক্টেড ফর্ম. তো জেনারেল ফর্ম রে তোমার যদি গোটে পার্টিকুলার ক্রিস্টাল র जो इंडिसेस थांते मिला इंडिसेस जोरा तो इफ दे आर वेरिएबल तक कोनते कोन जनरल फॉर्म. एग्जांपल तुम्हें HKL नहीं पारो जहां सिंबल होची HKL कैन बी वेरिएबल. चूंकि एग्जांपल तुम्हारो क्यूब रो एग्जांपल 1 नॉट हे पारो सिंबल नॉट 1 नॉट हे परिबो नॉट 1 हे परिबो. एरा सब जां क्यूब रो सिंबल हे परिबो. तो सेरा वेरिएबल. सो इंडिसेस प्लेसेस आर वेरिएबल जदी ताहले जनरल फॉर्म अछि. स्पेशल फॉर्म रे तुम्हारो इंडिसेस आर कांस्टेंट. कौन अच्छी गोटे क्रिस्टल फॉर्म रा गोटे पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिसेस थाए जोटा कि तुम ऑक्टाहेड्रन सब 1 1 1 ही रह किसी चेंजेस हो पारिबनी. कौन सी प्लेस चेंजेस हो पारिबो नहीं. 1 1 1 सब कांस्टेंट रहबो. सेमती रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म रे तुमरो पार्टली कांस्टेंट रहबो, पार्टली वेरिएबल रहबो. एग्जांपल तुम HK नॉट नहीं पारिबो प्रिज्म रो जोतरे कि H और K वेरिएबल 0 इज ऑलवेज कांस्टेंट बा नॉट ता सब कांस्टेंट. तो पार्टली वेरिएबल हला, पार्टली कांस्टेंट हला, तब को जे रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म. एग्जांपल तुम्हें प्रिज्म नहीं पारे. तापर तुमरो थिला सिमेट्री अनुसार हॉलोहेड्रल हॉलोहेड्रल, हेमीहेड्रल, हेमीमॉर्फिक, टेट्राहेड्रल, तब बदला एनांसियोमॉर्फिक फॉर्म. सो हॉलोहेड्रल फॉर्म रे मोर इट इज अ फॉर्म विद इन ए क्लास तुम कह परिबो व्हिच शो हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री. गोटे पर्टिकुलर क्लास रे जी हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री देखा था हॉलोहेड्रल फॉर्म कह जाए, बा गोटे पर्टिकुलर सिस्टम रे जी हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिमेट्री देखा हॉलोहेड्रल क्लास भी कह जाए. तो हॉलोहेड्रल फॉर्म रे जितनी की नंबर ऑफ फेसेस थाए हेमिहेड्रल तार आधा थाए बा हेमिहेड्रल फॉर्म होची इट इज कंटेन हाफ द नंबर ऑफ हॉलोहेड्रल फॉर्म. जोड़ा कि तापर हेमीमॉर्फिक फॉर्म होची यू विल फाइंड डिसिमिलर फेसेस एट टू एंड अबाउट एन एक्सिस. दीटा एंड तुम्हें डिसिमिलर फेसेस पाइबो. एरा धरा इतकी अबाउट एन एक्सिस तुम कोन करछो डिसिमिलर फेसेस पाउछो ताको कह जाए पोलर एक्सिस बोली. हम पोलर एक्सिस. तापर टेट्राहेड्रल क्वार्टर नंबर ऑफ फेसेस देखो कौन देबो क्वार्टर नंबर ऑफ फेसेस प्रेजेंट थाए. इन द एनांसियोमॉर्फिक डजंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री. ओनली तार कोन जोड़ा तुमरो HM सिंबल है 2 2 2 देखुछो 2 3 देखुछो एगुरा सब जान होछन तो एनांसियोमॉर्फिक फॉर्म जोतरे कि कोनोसी प्लेन ऑफ सिमेट्री बा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नाही. तो एला तुम्हारा डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हें सिमेट्री कह करबा सिमेट्री. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म. जोन जोन होची गोटे क्रिस्टल ग्रुप ऑफ फेसेस व्हिच एजेस आर पैरेलल टू ईच अदर. जदि तुम्हें गोटे क्रिस्टल रे ग्रुप ऑफ फेस कंसीडर करबा यदि हमें फ्रंट बैक राइट लेफ्ट चार्टा फेस कंसीडर करछंती तांकर एज गुरा हो एटा गोटे एज आ गोटे एज तो एगुरा सब एज हो तार जे कोन तुम एज को नेले दे आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर. तो से केस रे दीज फोर फेसेस आर कंसीडर्ड प्रेजेंट इन वन जोन. गोटे जोन ने प्रेजेंट थांते. तो गोटे जोन को डिफाइन करिया को गोटे एक्सिस निया जाय ताको कहै जाय कोन जोन एक्सिस. जोन एक्सिस. सो जोन एक्सिस कोन इट इज अ एक्सिस that passes to the center of the crystal and parallel to all faces in that zone. गोटे पर्टिकुलर जोन को तो डिफाइन करा होची
गोटे जोन अंडर रे जेति की फेस थिबे ऑल फेसेस विल बी पैरेलल टू द जोन एक्सिस. So zone axis it is important for calculation of zone axis. So if suppose UVW is a we'll take two faces H1 K1 L1 and H2 K2 L2. There are two faces. So if we have two non-parallel faces, we can calculate their zone axis. जदि हमारे दीटा non-parallel faces है, हमें तादरू zone axis calculate कर परिवा. So now we have two non-parallel faces, H1 K1 L1, H2 K2 L2. तो हमें तादरू zone axis केन calculate परिवा. We'll write down two times. दीथर लिखिवा को. Last दीटा को कौन करियो? एक्सक्लूड करिवो तापर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिवो तो रहइबो u पाइबो k1 l2 - k2 l1 v पाइबो ubw होची जेउटा तमरो इंडिसेस ऑफ द एक्सिस l1 into h2 - l2 into h1 w पाइबो h1 k2 h2 k1. So ubw is your zone axis जोटा को हमें रिप्रेजेंट करंती बाय स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करे गोटे एक्सिस को. स्क्वायर ब्रैकेट का इंडिकेट करे गोटे एक्सिस को. कर्ली ब्रैकेट गोटे प्लेन को इंडिकेट करे. तो एठी तुम्हारा UVW हैला. UVW इज द जोन एक्सिस. तुमर दीटा नॉन पैरेलल फेसेस थिबो ताल तुमे जोन एक्सिस कैलकुलेट कर परिबो. बा तुमे वैलिडेशन चेक कर परिबो कि गोटे पर्टिकुलर फेस गोटे जोन रे प्रेजेंट अछंती कि नाही. तो जोन कंडीशन, the zone condition, whether a face belong to a zone that should satisfy this condition. Suppose tomorrow कहला H1 K1 L1 H1 K1 L1 no HKL लिखते. HKL belongs to UVW zone, then HU plus KV plus U should be 0. गोटे फेस गोटे जोन में प्रेजेंट अछि माने तार जोन एक्सिस सहित एई कंडीशन से सैटिस्फाई करबे. यदि सैटिस्फाई न कला ताले से फेसटा से जोन में प्रेजेंट नाही. एटा तुम्हारा जोन कंडीशन एंड जोन एक्सिस. ठीक अछि. तमे यदि तुम्हारा दीटा फेस एमती जोन रे अछंती तांको एडिशन करिवो बा सब्सट्रैक्शन करिवो. लाइक तुम्हारा इफ तुम देखुछो H1 K1 L1 H2 K2 L2 दिना को गोटे जोन रे अछंती ताले H1 plus H2 K1 plus K2 L1 plus L2 जहा बारिवो सी भी सेही जोन रे रहबे. एडिशन रूल कोनती. यदि सब्सट्रैक्ट भी कर दबो जो जहा बारिवो से माने भी सेही जोन रे रहबे ताको सब्सट्रैक्शन रूल बोली कुआ जाय. तेरा तो डिफरेंट जोन कैलकुलेशन. तो क्रिस्टल सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम तादर तुम्हारा 32 सिमेट्री क्लासेस एकादा कह दे. तर 6 क्रिस्टल सिस्टम 6टा क्रिस्टल सिस्टम अछि. गोटे होची आइसोमेट्रिक टेट्रागोनल हेक्सागोनल ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक. सो आइसोमेट्रिक रे A = A1 = A2 = A3 अल्फा बीटा गामा केते 90 डिग्री. टेट्रागोनल रे A1 = A2 not equal to C अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री. हेक्सागोनल रे A1 = A2 = A3 not equal to C. The angle between A1 and A2 and A3 हो 120 degree. Positive ends of the horizontal axis 120 रहिबे and C axis will perpendicular to all the three axes. C axis सब axis सहित 90 degree angle करिवो. ऑर्थोरोम्बिक रे A is not equal to B not equal to C but alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. So ऑर्थोरोम्बिक किसे रे A axis को कहते ब्रैकी axis आओ
सी एक्सिस को कहते सॉरी बी एक्सिस को कहते मैक्रो एक्सिस है ना सेम मोनोक्लिनिक सिस्टम रे पड़े आसीबो तुमरो a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c बीटा इज नेवर बी इक्वल टू 90 डिग्री बीटा केबे 90 डिग्री होबा नाही तो a एक्सिस को ऑर्थो एक्सिस कहते b एक्सिस को क्लाइनो एक्सिस कहते a को क्लाइनो एक्सिस कहते b को ऑर्थो एक्सिस कहते मन रखो a को कहते कोन क्लाइनो b को ऑर्थो एक्सिस तापरे ट्राइक्लिनिक सिस्टम रे a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री अदर एंगल हे पारे तो एडा तुम तीनटा छटा सिस्टम रो एक्सियल रिलेशनशिप तो आरि अनुसार तुम छटा सिस्टम डिफाइन कराला तो ईच सिस्टम तुमरो ऑन द बेसिस ऑफ ए रिलेशन बिटवीन द क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस ने डिफाइन कराई ई सिस्टम पुनी फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्लासेस देखो तुम्हारा ईच क्रिस्टल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस को तो आइसोमेट्रिक सिस्टम हैज 5 क्लासेस टेट्रागोनल सिस्टम हैज 7 क्लासेस hexagonal system has 12 classes orthorhombic has 3 classes monoclinic has 3 classes triclinic has 2 classes there are 32 symmetric classes जो कि symbolize करा था वो HM symbol so first आसीबो तुमर isometric रे So first 4/m 3/2/m जोटा को हम कहउछंती हेक्साऑक्टाहेड्रल क्लास 432 gyroidal क्लास 4/3m हां हेक्साटेट्राहेड्रल क्लास 2/m 3/डिप्लॉइडल क्लास 2/3 होची टेट्राहेड्रल क्लास तो आपे हम यूज करंती कोन 4/m 3/2/m ओवर लिखबा 3 4 6 सो 4/m तीनटा अछि 3/4टा अछि 2/m तीनटा अछि 6टा अछि तो एटा हला तुमरो a1 a2 a3 को रिप्रेजेंट करंती ए देटा डायगोनल त माने तुमरो 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड अछि 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड अछि 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड अछि 3 मिरर प्लेन 6 मिरर प्लेन आ बाय m मींस होची 4 फोल्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू ए मिरर प्लेन बाय m मींस कोन 4 फोल्ड एक्सिस परपेंडिकुलर टू ए मिरर प्लेन तबरा शो 4/m 2/m 2/m ता होची डाइटेट्रागोनल डाइपिरामिडल ता शो 4 2 2 4 2 2 कोन टेट्रागोनल ट्रापेजोहेड्रल तापरे 4 mm डाइटेट्रागोनल पिरामिडल 4/2m टेट्रागोनल स्केलेनोहेड्रल 4 बार टेट्रागोनल डाइस्पेनर्ड 4/m टेट्रागोनल डाइपिरामिडल 4 टेट्रागोनल पिरामिडल तो इठी हमें लिखंती 4/m 2/m 2/m जे कोन से सिस्टम में तुम तारा 1 2 2 लिखिबो फर्स्ट दिटा होची एक्सिस फर्स्ट c एक्सिस सेकंड टा होची a1 a2 एक्सिस थर्ड टा होची डायगोनल तो इठी सेबला 1 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड अछि 2 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड अछि 2 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड अछि 2 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड एक्सियल को दिटा अछि आ दिटा डायगोनल अछि इन मिरर प्लेन केते 1 2 2 टोटल 5 मिरर प्लेन्स प्रेजेंट अछि है ना सेबला तुम अदर बाहर कर पानी तापर आसीबो 6/m 2/m 2/m 6 2 2 6 mm 6/2m आपको देखिए लिखते हो तो सुविधा हो 6/m 6 अरेला 3/2m 3 2 3/3 3 4 आ गोटे कोन रहला 3m तो 6/m 2/m 2/m होची हेक्सागोनल डाइपिरामिडल 6 2 2 हेक्सागोनल ट्रापेजोइडल 6 mm डायहेक्सागोनल पिरामिडल जोनाटी 4 mm कोथलो डाइटेट्रागोनल पिरामिडल सेठी डायहेक्सागोनल पिरामिडल 6/2m होची कना 6 बार इज इक्विवेलेंट टू 3/m तो एटा डाइट्रायगोनल डाइपिरामिडल हबो तो 6 बार भी इक्विवेलेंट टू 3/m तो एटा हबो ट्रायगोनल डाइपिरामिडल 6/m होची हेक्सागोनल डाइपिरामिडल 6 होची हेक्सागोनल पिरामिडल देन 3/2m होची हेक्सागोनल स्केलेनोहेड्रल 3 2 हला ट्रायगोनल ट्रापेजोइडल 3 बार हला रोम्बोहेड्रन 3 हला ट्रायगोनल पिरामिडल
3m है डाइट्राइगोनाल पिरामिडाल कौन डाइट्राइगोनाल पिरामिडाल तो जो 3 आसो ट्राइगोनाल वर्ड यूज कर कौन ट्राइगोनाल 3 और 6 बार आसले ट्राइगोनाल ठीक अच्छे 6 आउ 3 बार आसले हेक्सागोनाल वर्ड यूज हो इनिशियली मन तो हेल्प कर हाँ जो 6 बार कौच ये कौन कौच ट्राइगोनाल वर्ड कौच जो 3 बार आसे कौन कौच हेक्सागोनाल स्केलेनोहेड्रल ठीक अच्छे तो आप तुम लिख 6/m 2/m 2/m जो कि 1 3 3 रहा सिमिलर लाइक तुम टेट्रागोनाल एटा हूँ सी एक्सिस एटा हूँ a1 a2 एक्सिस सेकेंड हूँ a1 a2 थर्ड हूँ डायगोनाल तापर आसो तुम ऑर्थोनॉमिक सिस्टम 2/m 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 1 1 एटी किसी लिखबार नहीं 1 1 1 जी अच्छी से प्रेजेंट अच्छी है तो 2 2 2 2 m m फर्स्ट हूँ रॉम्बिक डाइपिरामिड 2/m 2/m रॉम्बिक डाइपिरामिड तापर रॉम्बिक डाइस्पेनॉइड 2 2 2 तापर हूँ कि रॉम्बिक पिरामिड 2 mm 2/m m 2 प्रिज्मेटिक एरा हूँ ट्राइक्लिनिक प्रिज्मेटिक डोमेटिक स्पेनोइडल तापर शो 1 बार 1 पिनाकोइडल पेडियल पिनाकोइडल पेडियल एठू तुम जी लिखा हो लेटर से तुम सिमेट्री प्रेजेंट अच्छे ये जगह तुमको बाहर करिया पड़ो है आ जदि तुम सिंबल फर्स्ट लेटर फर्स्ट प्लेस जोड़ा सिंबल 4/m अच्छी 6/m अच्छी 2/m अच्छी 1 बार अच्छी 3 बार अच्छी ताले से केस रे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था यदि कौन थी 4/m 6/m 2/m 1 बार 3 बार तो मैंने ये देख तुम एतरे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट अच्छी ठीक है एतरे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट अच्छी एतरे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट अच्छी एतरे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट अच्छी एतरे प्रेजेंट अच्छी एतरे नहीं 6 बार नहीं 6 बार नहीं 6/m रे अच्छी एतरे प्रेजेंट अच्छी है ना एटी प्रेजेंट अच्छी टोटल 32 सिस्टम क्लासेस रो तुमर 11 जो क्लासेस रे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट अच्छी आ अदर जेतिक रहला तदरे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं 21 ने प्रेजेंट नहीं 11 ने प्रेजेंट अच्छी टोटल सब जाक सिमेट्री क्लासेस मु खाली HM सिंबल मन रखा पड़ो तादरो तुम डिराइव करियो व्हाट आर द डिफरेंट तुम सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट विद इन द सिस्टम और क्लासेस सॉरी सिस्टम नो क्लासेस ईच सिस्टम रे तुमरा फॉर्म प्रेजेंट थाए ईच क्लासेस रे फॉर्म प्रेजेंट थाए सो टोटल तुमरा टोटल कह गले देयर आर 48 फॉर्म्स from which तुमरा 15 फॉर्म आर आइसोमेट्रिक 33 आर नॉन आइसोमेट्रिक तो नॉन आइसोमेट्रिक फॉर्म किसी बेसी पड़े नहीं आइसोमेट्रिक रो सही क्यूब डोडेकाहेड्रन तापरे क्यूब ऑक्टाहेड्रन डोडेकाहेड्रन ट्रापेजॉइडन ट्राइस ऑक्टाहेड्रन हेक्सटेट्राहेड्रन राइट तापरे तुमरा हेक्सॉक्टाहेड्रन तो ये सब तुमरा नॉर्मल फॉर्म रे आसे एते तुमरा मेन HM सिंबल पड़े एटा एते इंपोर्टेंट पड़े नहीं एते ठीक अछि तापर रहला तुमरा एटा गला तुमरा सिस्टम रे या पढिबो तादरे तुमरा स्टेरोग्राफी प्रोजेक्शन सब क्लास रो तो पड़ेनी तुमरा ये जो मतलब 2/m रे इग्रा बेले बेले पढ़िबार चांसेस थाए 2/m रे है एटा तुमरा खाली पैटर्न मन रखिबा देखो 2/m तुमरा बेले बेले एटा पड़े कोडा तुमरा हमर कोन कोन देखो डाइस्पेनॉइड पड़िथिला थरे डाइस्पेनॉइड आइते होय the dispennate right
এটা হচ্ছে 2 mm 2 mm 2 mm, এটা হচ্ছে 2 mm and this is হচ্ছে 2 2 2 সেটি 6টা মনে রাখিব, এটি 4টা মনে রাখিব, এটা ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ ଅଲରେଡି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିସାରିଛ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତ ଏବେ ଖାଲି ରିଭିଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ଏତିକି ମୋଷ୍ଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଇକି ଦେଖିବ, ଅଦର ଗୁଡ଼ା ବି ତୁମେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିପାରିବ। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟ, ସୋ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ତ ଆୟନ ବା ଲାଟିସ୍ ଆୟନ ଭିତରେ ବଣ୍ଡିଂ ହୁଏ, ତ ସେମାନେ ରିପିଟେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ରିପିଟେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଟିସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ বা ক্রিস্টাল ফর্মেশন होता है तो आयन बा लैटिस को स्पेसिफिक पोजीशन हिसाब से माने अरेंजमेंट होती। सो ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ आयन्स, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल जब ग्रोथ हुए तुम्हारा जो पर्टिकुलर लैटिस साइट रे गोटे आयन फॉल करिया कथा बेले बेले कौन हुए से लैटिस साइट रे फॉल करि पारे। सपोज इटी ग्रोथ होची एटा लैटिस साइट एठी न पड़ी के ए जगह पड़ला, तो नाउ वंस गोटे आयन गोटे जगह रे ड्यूरिंग एडिशन बा ग्रोथ बा फेस ग्रोथ हो बा क्रिस्टल ग्रोथ हो जदी कोनो से आयन गोटे तार ओरिजिनल प्लेस रो मिसप्लेस हे गला वंस माने, सो इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो सेटा फिक्स हे जाय, तो ताको कहते क्रिस्टल डिफेक्ट। बाय यूजुअली ड्यूरिंग तुम्हारा ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल सम लैटिस पॉइंट रे मिसिंग थाए आयन्स, तो ताको कहते क्रिस्टल डिफेक्ट। तो एनी तुम्हारा इरेगुलरिटीज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर और लैटिस एंड भी कॉल्ड एज क्रिस्टल डिफेक्ट। सो डिफेक्ट टा गोटे कोनोसी पर्टिकुलर गोटे पॉइंट पई बा गोटे आयन पई हे पारे by any line on the तुम्हारा lattice structure हे पारे by any plane on the lattice structure हे पारे। तो बेसिकली तुम्हारा एग्जाम पाई हमारे पॉइंट डिफेक्ट होचो इंपोर्टेंट। तो तीनटा टाइप रा डिफेक्ट होची, गोटे होची पॉइंट डिफेक्ट, गोटे होची प्लेन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और होची प्लानर डिफेक्ट। जो प्लानर डिफेक्ट अच्छी तुम्हें ट्विनिंग कैन बी कंसीडर एज ए प्लानर डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट तुम्हें एज डिफेक्ट पाइबो। अब पॉइंट डिफेक्ट रे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पाइबा सेरा मन रखिया सब। सो पॉइंट डिफेक्ट रे फास्ट मोर स्कॉटकी डिफेक्ट आसीबो गोटे, फ्रैंकेल डिफेक्ट आसीबो गोटे, ठीक अछि। स्कॉटकी डिफेक्ट होची कॉल्ड तुम्हारा वैकेंसी डिफेक्ट, जो कि गोटे पेयर ऑफ कैटायन और आनायन एब्सेंट थाए लैटिस स्ट्रक्चर गोटे पेयर ऑफ कैटायन और आनायन एब्सेंट थाए। जेतु गोटे कैटायन और आनायन एब्सेंट थाए तो देयर विल बी नो चेंज इन चार्ज बैलेंस, चार्ज रे कोनसी चेंज होनी है ना। तापर फ्रैंकेल डिफेक्ट होची मिसलोकेशन डिफेक्ट, जो कि गोटे पर्टिकुलर आयन इन ए लैटिस साइट दैट मूव्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइट। तो गोटे पर्टिकुलर आयन सपोज दिस आर द लैटिस साइट, जो आयन नॉर्मली तार ओरिजिनल पोजीशन रू से कौन इंटरस्टिशियस बा इन बिटवीन लैटिस स्पेसेस ता भितरे मूव कर दी। तो से कौन कौन इंटरस्टिशियल साइट को जो नॉर्मल साइट रू मूव करला सेटा होची फ्रैंकेल डिफेक्ट। सब एटी गोटे पर्टिकुलर सिंगल आयन बा गोटे पॉइंट कथा कहू। तापर इंटरस्टिशियल बा इंप्योरिटी डिफेक्ट, जदि फॉरेन एटम आयन इंटरस्टिशियस को ऑक्युपाई करिवो ताल तो कहते इंटरस्टिशियल बा इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो ड्यूरिंग ग्रोथ तुमरा किछिटा प्लेस रे कोन वैकेंसी थाए, से वैकेंसी गुरा जदि कोनोसी आयन विद इन द लैटिस रे जहा आयन जे से वैकेंट स्पेस को मूव कर जिवो ताल पे फ्रैंकेल डिफेक्ट हो। जदि कोनोसी फॉरेन आयन ता एंटर कला ताल से आइजो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेमती सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट जदि फॉरेन आयन रिप्लेस ए नॉर्मल आयन इन द लैटिस तो कहते सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। सेला क्रिस्टल डिफेक्ट तुमर हेल्प करे बहुत, आइदर तुमर इंटरस्टिशियल डिफॉर्मेशन जो डिफॉर्मेशन भी करि परिबो लैटिस,
डिफेक्ट रहिले ता सहित डिफेक्ट रहिले तुमर मिनरल रो कलर ऊपर अफेक्ट करे कलर ऑफ द मिनरल को है थरा तुमर क्रिस्टल डिफेक्ट नेक्स्ट जामे ट्विनिंग ट्विनिंग इज आल्सो अ क्रिस्टल डिफेक्ट तुम कहि परिबो Twinning, it is the simultaneous growth of two crystal of a single mineral. तो गोटे पर्टिकुलर मिनरल रो दीटा क्रिस्टल जदी साइमल्टेनियस ग्रोथ करंती ताल ताको कहै जाय ट्विनिंग सब एटा गोटे क्रिस्टल है तोर ए डायरेक्शन में ग्रोथ होची तो लैटिस वाला सब ए डायरेक्शन में ग्रेजुअली ऐड हे चलछंती गोटे टाइम रे कहला त लैटिस रे आयन रो एडिशन डायरेक्शन चेंज हला तो जो जगह रो तुम्हारा ट्रांसलेशन डायरेक्शन चेंज हो से दैट विल बी कंसीडर्ड एज डिफरेंट लैटिस और डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट क्रिस्टल तो से केस रे हम ताको कोन कहते ट्विनिंग कहते सो दिस क्रिस्टल एंड दिस क्रिस्टल बिलोंग्स टू सेम मिनरल को बिलोंग करंती बट they are considered as different crystal because तुम्हारा लैटिस स्ट्रक्चर जहाँ रूल अच्छी तुम्हारा जदि गोटे पर्टिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर रे गोटे ट्रांसलेशन आयन रो होची गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे पर्टिकुलर अमाउंट रो सब हबो इफ द डायरेक्शन विल चेंज देन फ्रॉम दैट मोमेंट दैट विल कंसीडर एज अनदर स्ट्रक्चर तो सेत में एटा डिफरेंट हे पारे तो डिफरेंट क्रिस्टल अच्छी तो एटा कोन पई हुए चेंज इन प्रेशर टेंपरेचर की ग्रोथ कंडीशन किसी भी चेंज हेले तुम्हारा लैटिस रे मूवमेंट बा एडिशन बा ग्रोथ डायरेक्शन चेंज हुए तो कहते ट्विनिंग कहते सो ट्विनिंग रे दीटा क्रिस्टल जो प्लेन रे जॉइन होंती ताको कहते हमें कंपोजिशनल सरफेस so compositional surface where two twinned crystal they meet with each other or join you can say तो एटा गोटे ट्विन क्रिस्टल हेले दिस विल बी योर कंपोजिशनल सरफेस जो कंपोजिशनल सरफेस अच्छी एटा मे बी तुम्हारा प्लानर हे पारे और मे बी नॉन प्लानर हे पारे लाइक तुम्हारा एमती हे पारे क्रिस्टल नहले it can be like this जो तुम्हें नॉन प्लानर है वो ताले द कंपोजिशनल सरफेस डिफाइंड बाय ट्विन प्लेन यदि कंपोजिशनल सरफेस इज अ प्लानर वन देन इट इज डिफाइंड बाय ट्विन प्लेन एंड नॉन प्लानर इट इज डिफाइंड बाय ट्विन एक्सिस सो ट्विन प्लेन को डिफाइन करा जाए हमारा कर्ली ब्रैकेट रे ट्विन एक्सिस को डिफाइन करा जाए स्क्वायर ब्रैकेट रे ठीक है से अनुसार तुम्हारा ट्विन लॉ भी डिफाइन करा जाए कि वेदर द कंपोजिशन सरफेस इज प्लेन और इट इज एन एक्सिस ताको हमें ट्विन लॉ भी कहते कि गोटे पर्टिकुलर मिनरल रो जो ट्विन क्रिस्टल अछंती ऑन व्हाट प्लेन और ऑन व्हाट एक्सिस दे विल शो ट्विनिंग सो गोटे पर्टिकुलर मिनरल रो जहाँ भी ट्विनिंग अच्छी गोटे प्लेन रे जदी देखौ छी बा गोटे एक्सिस रे देखौ छी से सब बेले सही प्लेन और सही एक्सिस रे देखे बट के डिफरेंट क्रिस्टल बा डिफरेंट गोटे सिंगल मिनरल डिफरेंट ट्विन क्रिस्टल डिफरेंट प्लेन रे देखियो सब गोटे सिंगल प्लेन रे देखा जो प्लेन रे देखा करता सब गोटे सही प्लेन रे ही देखियो तो शो दिमाग डिफरेंट टाइप्स
दुटा टाइप रो ब्रॉडली डिवीजन कराई छि गोटे होछि कांटेक्ट ट्विनिंग और होछि पेनिट्रेशन ट्विनिंग सो कांटेक्ट ट्विनिंग रे तुमरो कंपोजिशन सरफेस टा प्लानर थाए तो एटी कांटेक्ट ट्विनिंग रे तुमरो कंपोजिशनल सरफेस प्लानर था पेनिट्रेशन ट्विन रे कंपोजिशनल सरफेस नॉन प्लानर था जो कंपोजिशन सरफेस प्लानर था कोडी कांटेक्ट ट्विनिंग रे सो कांटेक्ट ट्विनिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स दुटा टाइप रो था गोटे होची पॉलीसिंथेटिक और लामेलर ट्विनिंग कह जाए जो थे तुम्हारा द प्लेन कंपोजिशनल प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस देखो दे प्लाजियोक्लेज देखा जाए तापर आसीबो तुम्हारा साइक्लिक ट्विनिंग तो इग्रस यदि कंपोजिशन सरफेस हवा ताले का गोटे साइक्लिक मैनर रहले ताको कहते साइक्लिकल ट्विनिंग देन पेनिट्रेशन ट्विनिंग रे तुमरा देयर विल बी नॉन प्लानर कंपोजिशन सरफेस दे आर डिफाइंड बाय ट्विन एक्सिस सो दीज आर मोर टाइप्स ऑफ ट्विनिंग देन हम देखिया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विनिंग द फाउंड इन डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर different type of twinning on the basis of more crystal system रुचि तुम्हारा ट्राइगोनिक राइस अल्बाइट पेरिक्लेन रो अल्बाइट होची नॉट वन नॉट प्लेन नॉट वन नॉट एक्सिस पेरिक्लेन रो अल्बाइट पेरिक्लेन मिसिले होची कोन क्रॉस आइस ट्विनिंग देखा माइक्रोक्लेन रे तापर मोनोक्लिनिक रे आछबो गोटे ऑर्थोक्लेज रो तीनटा मेन इंपोर्टेंट मानेबैक कार्लस्पाइड ब्रावेनो तापर मानेबैक आओ तुम्हारा होची प्लेन कार्लस्पाइड होची एक्सिस नॉट वन एक्सिस और ब्रावेनो होची नॉट वन प्लेन यार इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्थोक्लेज तुम डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तब सैलोटेल ट्यूनिंग देखवा जिप्सम जोटा वन नॉट नॉट प्लेन रे तब ऑर्थोरम्बिक रे आछबो वन नॉट नॉट प्लेन रे साइक्लिकल जोथि आर्गोनाइट देखबो क्राइसोबेरिल देखबो सेरुसाइट देखबो पूरा साइक्लिकल ट्विनिंग देखबे तापर दीटा इंपोर्टेंट आछबो स्टोरोलाइट रो तीरा क्रॉस देखो राइट एंगल क्रॉस देखाय गोटे 60 डिग्री क्रॉस देखाय स्टोरोलाइट देखबो नॉट 31 प्लेन रे गोटे आ गोटे तुम HKL कहि परिबो बा 231 प्लेन कहि परिबो हो जे कि स्टोरलाइट रो ताबरे टेट्रागोनल रे तुमरो साइक्लिकल कांटेक्ट आसीबो मोस्टली टेट्रागोनल जेति कि साइक्लिकल देखांते जोडा कि नॉट 11 प्लेन रे देखबे रुटाइल और कैचिटाराइट आसीबो ताबरे हेक्सागोनल रे दीटा इंपोर्टेंस आसीबो गोटे होची कि कैल्साइट रो आ गोटे होची कि तुमर क्वार्ट्ज मेन तीनटा होची कि ब्राजील डॉल्फिन जापानीज तो ब्राजील और जापानीज तुमरा प्लेन देखेबे 1 2 बार खाली 1 1 2 बार 2 तापरे तुमरा ब्राजील देखो 1 1 बार 2 नॉट प्लेन रे डॉल्फिन लो नॉट 1 एक्सिस देखो एटा पेनिट्रेशन ट्विनिंग हो इन a plane can be penetration if there will be intersection of two planes they can produce a planar structure then तुमरा आइसोमेट्रिक रे आछबो स्पिनल दी प्रकार देखबो 1 1 1 प्लेन रे देखबो 1 1 1 एक्सिस रे देखबो एंड पाइराइट देखबो तुम्हारा आयरन क्रॉस